Hello viewers and my dear students, welcome all you on my YouTube channel. This is Dr. Gyanendra Fuldalke, Assistant Professor in Law, Shri Shivaji Law College, Parvani. Friends, today we will discuss laws inconsistent with fundamental rights, Article 13 of Indian Constitution. आज हम आर्टिकल 13 के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर लॉज विच आर इनकन्सिस्टेंट, जो इनकन्सिस्टेंट है लॉज फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा आज करने वाले हैं। आर्टिकल 13 laws inconsistent with or in derogation with fundamental rights. This is the heading of article 13. It means that certain laws which are not consistent with the part 3rd of Indian Constitution, then all such laws are subject to judicial review. Article 13 clause 1 provides that all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution, insofar they are consistent within the provisions of Part 3rd, shall to the extent of such inconsistency be void. It means that Article 13 Clause 1 is applicable to all pre-constitutional laws which were there in India, customary laws which were there in India, and they are, if they are discriminatory of or they are contravening the provisions of Part 3rd of Indian Constitution, then all such laws are void in nature. So this is very important article or clause of article 13 clause 1, that it struck down all customary laws. आर्टिकल 13 क्लॉज 1 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसके तहत पूरे जो लॉ है 26 जनवरी 1950 के पहले के पूरे लॉज जो इनकन्सिस्टेंट नहीं है, जो डिस्क्रिमिनेटरी है या पार्ट 3rd के अगेंस्ट में है, तो वो सारे लॉज इनकन्सिस्टेंट डिक्लेयर किए गए हैं और वॉइड है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में प्रोवाइडेड द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स conferred by this part, and law made in contravention of this clause shall to the extent of such contravention be void. That is future laws. Means article 13 clause 2 provides that the state shall not make such laws which will violate the fundamental rights which are conferred by part 3rd of Indian Constitution. So article 13 clause 2 will applicable to post constitution laws, means when the constitution came into existence, after these laws, this act is applicable or this clause 2 is applicable. Article 13 clause 3 provides that the definition of article 13 clause 3 is divided into A and B. In this article, unless context otherwise requires, law includes. So definition of law दी गई है कि law means क्या है। तो लॉ की डेफिनेशन है, लॉ कुछ कंपोनेंट्स वहाँ पर डिस्कस किया है कि एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, बाय लॉज, रूल्स, regulation, notification, customs and usages are treated as laws. ये laws की फैसेट है। अगर कोई ऑर्डिनेंस निकालता है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल प्रोमोगेट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, कोऑपरेटिव अथॉरिटीज़ बाय लॉज फ्रेम कर सकते हैं, रूल्स फ्रेम किए जा सकते हैं, रेगुलेशंस तैयार किए जा सकते हैं, नोटिफिकेशन इशू होते हैं, वो सारे लॉ के फैसेट है और वो लॉ ट्रीट किए जाएंगे। हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, इफ such things are there in the territory of India as a force of law, then it is law. And if it is inconsistent with part 3rd of Indian Constitution, such ordinance, order, bylaw, rules, regulation, notification, customs and usages may be struck down by the Supreme Court of India. Article 13 clause 3 subclause B means law enforced, means law passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India. So law making body is there, for example Parliament of India, state legislatures are there, or Panchayat Raj institutions are there which can make the laws for India. And if these laws are there, the law enforced means the laws passed by competent legislative authority or any other authority which is empowered to make the laws. So जो कायदा करने की जो एक परमिशन है या पावर है, वो लेजिस्लेचर के पास है, वही उन्होंने बनाए वाला ही कायदा वो सुप्रीम रहेगा या उसको ही हम लॉज बोलेंगे। फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स।
चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो होता है उसके बेस के ऊपर एक डॉक्ट्रिन्स इवॉल्व की गई है. Doctrine of eclipse is applicable to fundamental rights if a particular law is inconsistent with the provisions of constitution. If such consistency removed, then fundamental right is available to all persons. Doctrine of eclipse applicable only to constitutional laws. So constitutional laws are shadowed by some provisions of law, and if that inconsistency is removed from the particular period, then fresh fundamental right is applicable to all Indian citizens. फ्रेंड्स, हम एक बात करने वाले हैं श्रेया सिंगल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 2013 की. एक केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था कि आर्टिकल सेक्शन 66A जो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2001 का, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस थे कि आप सोशल मीडिया थ्रू कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, जिसके थ्रू कुछ के इमोशंस हर्ट होते हैं या कुछ होता है. तो श्रेया सिंगल ने कुछ ऐसा ही फेसबुक के ऊपर एक कमेंट किया था, शेयर किया था, जो और उसके ऊपर FIR लॉन्च हुआ था, केस दाखिल हुई थी. उसने श्रेया सिंगल ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल की और कहा कि इट इज़ माई फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज़ गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, आर्टिकल 66A वायलेट करता है बेसिक फंडामेंटल राइट को, और 66A was declared as invalid and unconstitutional. Second case, that is Bikaji versus State of Madhya Pradesh, where doctrine of eclipse was evolved by the Supreme Court of India and held that if laws are inconsistent with the Part 3rd of Indian Constitution, then according to doctrine of eclipse, if that eclipse is removed, that inconsistency is removed, then fresh fundamental right will be available to Indian citizens. But during the period of that eclipse, fundamental right is not available. Second doctrine which is there regarding Article 13 of Indian Constitution is the doctrine of severability. If there is an inconsistency or contravention of any provision of a law with fundamental rights, if then such inconsistent part, if may be removed from the statute and rest of the law is valid and consistent. If inconsistency removed, सेवर किया, सेपरेट किया, अगर कोई थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी है, फॉर एग्जांपल एक लॉ के अंदर 10 सेक्शंस है और 10 सेक्शन में से ओनली 2 सेक्शंस कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं, तो 2 सेक्शन को ही बाहर निकाला जाएगा, बाकी का लॉ जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा. वो दो जो सेक्शंस है उनको ही हटाया जाएगा और उसको ही इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा. दिस activity of the judiciary is called as doctrine of severability, through which the judiciary can sever the inconsistent part from the consistent part. When judiciary separate inconsistent part from the consistent part, it is called a doctrine of severability. So it is a power of judiciary. Sometimes whole act may be declared as invalid and unconstitutional. Sometimes certain provisions of the Indian Constitution or Part 3rd or any law may be declared as invalid and constitutional. So it depends on the role of judiciary, the intention of judiciary in that area, whether to struck down particular section or whole law should be struck down. RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1957 इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट. ये एक जजमेंट है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है. एक केस में क्या हुआ था कि जो गेम्स होते हैं, जो गैम्बलिंग इन नेचर है और इन्वॉल्व स्किल है, ऐसे कुछ गेम्स है, तो पूरे ही गैम्बलिंग के स्पोर्ट्स के ऊपर, गेम्स के ऊपर बैन किया था यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लॉ के थ्रू. बट सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट कि जो कुछ स्किल वाले गेम है वो वैलिड रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे. खाली जो गैम्बलिंग इन नेचर है, हाँ, बेटिंग जो करवाते हैं गेम्स, वही वो उसके दायरे में जुरिस्डिक्शन में आएंगे. बाकी जो गेम्स है, गेम्स विच रिक्वायर्ड स्किल is consistent with the Part 3rd of Indian Constitution, and all such laws are consistent with the Part 3rd of Indian Constitution. Okay, thank you friends for your patience listening. If you like this video, please share it with your friends and colleagues. Thank you.